पर शुरू होगा. And to begin with this, we have a very dear patron, Mr. Kobi Shashani here. Big round of applause and heartily warm welcome to you, sir. Along with we have Mr. Foundation and many more. To organize this cleanathon, the thought came to Sahar Bhamla. So the DY Patil Decal along with Cafe Muttuswamy, the Rami group, all of us are coming here to join hands for this beautiful cause. And this चिकन बिरयानी और जैसे ही हम अपना क्रियाथन शुरू करेंगे, we've got I request all the DY Patil students, please come on my left hand side to collect your gloves. Sahar Bhamla, Farah ji, बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका. And you're looking shining like a sun, looking beautiful in pink. तो अब चलते हैं, थोड़ा हाथ मैला करेंगे. But before that, Asif bhai, I would request all of you all, we'll wait for others for the time. We'll want her to meet Kobi, you met? Yeah, please. Consul General of Israel. Very dear. How's it going? Very good. I think we know to make is also. हमारे बीच जगत गुरु सूर्य आचार्य कृष्णा देवानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं. इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं. देखिए, जब सब धर्म जाति के लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो मिलकर के एक अभियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो धरती की सेवा करने के लिए सब जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तब ये अच्छा कार्य होता है. जैसे हमने 550 वीक कंप्लीट किया है और आज इसका बहुत बड़ा कंप्लीशन है. But Asif ji and Sahel ji should not stop here. It has to be a continuous process, and in this entire process, so much thank you. Thank you so much, Siddharth ji, for all your motivation. And can I have a wonderful momentum for Meghna Ghai ji? Please come. Yes. I would a big round of applause for Farah Khan ji. As you can see, on all around on YouTube, on all the channels, on all the channels, doing one. Can I have a sapling for Ramona Narang ji, please, a sapling for Ramona Narang ji.
तो सब धूप आ जाएगी आपके आपकी तो सब सुनेगा प्लीज इन सेंटर स्टेज दबा के हमारे साथ एंड थैंक यू आसिफ, थैंक यू सर। सर चली गई ओके। और मुझे सुबह सुबह बुलाने के लिए, और मैं तो टाइम से पहले आ गई थी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और ये हफ्ते में कितने बार करते हो तुम? Every week होता है, but we do a symbolic thing when it's 50 weeks over, Okay. or when it's 100. Only then we do a big like a photo op. तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर हफ्ते हम क्लीन अप करें। इससे बेटर है आप कचरा मत फेंको ना बीच पे, प्लीज। Thank you so much, Farah. And a big round of applause for Farah. I request the CEO of Bisleri, who is always here with us, and Bisleri has been providing water to all our students here who come here, who relentlessly work. So they've been giving us water for weeks and weeks together. I request Mr. Angelo to speak a few words on sustainability and the PET bottles. The PET bottle of Bisleri or any other beverage is completely recyclable and it should be repurposed. People should understand that used plastic is valuable and it is not to be thrown away. It can be sent for recycling. I am thankful to Mr. Bamla and Seher and the हमारे शंकराचार्य जी के लिए एक सैपलिंग प्लीज लाइए सर। प्लीज गिव अ ब्यूटीफुल सैपलिंग टू शंकराचार्य जी। Sir. Lakshmi ji, people are looking at you. They were all looking at your glasses and they want. Thank you for having me here. It's really for all the dignitaries on the stage and my dear students. Wow. What I know of this river to be and what I see right now is just incredible. I want to first congratulate Bamla ji, Asif ji and Saher. What an incredible work. I think, being the Swachh Bharat ambassador, we do so many drives, but to see consistency and sustainability is really, really hard. And it's incredible that you have, not just doing it over a weekend, but you continuously for over 550 weeks, 2,000 weeks now. Okay, so 2,000 weeks is what you're going to get to, or is it? Fantastic. That's the target. I don't know if we'll be there to see that. But that's a commitment, right? To be committed to take care of our place and make sure it's clean and livable. I feel like we can come and play here now. Otherwise, we can't even stand or walk. So, Seher, wonderful work. And I hope this really affects the kids who are here and the communities around here. And as Faraji said, just don't put the trash out there, because this is our land and our space. And if we don't keep it clean, nobody else will, right? So I hope all your efforts do not go in vain, and that people do get more aware of all the work that you're doing. All the very best, dear. Congratulations. Jai Hind. Thank you, Lakshmi ji, and absolutely this. Thank you, Bora community, the Burhani Foundation, who's been actually working with us and with many other associations with the beach cleanup. The entire Burhani Foundation, all of y'all, has contributed so much in multiple beach cleanups. I request Ishita ji, please, a few words to motivate these children this sunny morning. Firstly, all the kids from all the schools, both the schools, can we hear a yay? Hey, yeah, come on, loud, yeah. Arey, I can't hear you guys. Jamna bhai, you can do better. Come on. DY Patil, 1, 2, 3, yay! Yeah, azun louder. Come on, one more time. 1, 2, 3, Jamna bhai. No, Jamna bhai, I can't hear you. DY. 1, 2, 3, Jamna bhai.
Okay, DY, can we do better than Jamna bhai? Hey, Azun louder. Hey, kya hai? 1, 2, 3. Come on, Jamna bhai. DY Patil is like Navi Mumbai and let's go. Okay, so thank you. I won't take up your time. मैं बस और एक जोरदार तालियां आमची हे बायकांना जोरदार एक ताली. They are the actual cleaners. I've been noticing them. एकदम मस्त. So really, really fantastic. As parents, I think I speak for all the mothers on stage. Anyways, we do a lot of talk about this in our schools, and I know all of you do. और हमारे लिए ये अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी है क्योंकि हमारे बच्चे ये सिखाते हैं हमें. और आप लोगों को यहाँ देख के बहुत बहुत उम्मीद है आने वाले कल के लिए. So thank you so much, and that's it from me. Bye bye. Thank you so much. Meghna, please your thoughts. Thank you. First of all, many congratulations to the schools, the parents of all these kids who have shown up this morning. It's very difficult, for this generation to be up and doing work and taking action. And I feel extremely grateful to be here amongst all of you. I think to make a change in the world, one person needs to stand up. And that one person standing up helps others stand up too. So I'm really, really grateful to Seher, who's such a young, dynamic girl. We are so impressed with her and her passion and what she's doing for the planet. So thank you, and thank you for involving us. And I hope we can keep helping you in some way or the other. Thank you, and once again. Yes, absolutely. Thank you, Seher. And all the very best, all of you. Again, just gratitude for all the volunteers. Thank you. Thank you so much, Meghna. And from the Jamna bhai, we have Sonali Gandhi ji. Sir, please felicitate. Thank you so much, and I have to say that I'm representing the Diplomatico here, and I have to say you that your work, it works, and the SIF and the SIF Bamla Foundation, Sarah, and all the staff of Bamla, because I was here last year. It was terrible. See what's happened today? That's your job. Thank you so much. And actually, absolutely, incoming. That's my Thank you so much. That's a beautiful gift from Kobi ji. And can Sarah present the small sapling to sir? So I think startup Asif bhai, let's flag off कर देते हैं हम. अच्छा. भारत माता की जय. आज के इस बामला फाउंडेशन की तरफ से आसिफ भाई और उनकी बेटी आज मुझे आग्रह से बुलाया, और मुझे इस चीज़ की पसंद की है कि आप सब यहाँ क्लीन करने के लिए आए हैं, और आपका कार्य हर घर में पहुँचे. घर से शुरुआत यदि कर दिए कि कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे तो नदी तक कोई कचरा आएगा ही नहीं. तो हम लोग सब लोग आज से एक ऐसा शपथ करें कि घर के बाहर कचरा फेंके नहीं और नदी से पानी बहता रहे. ये आप सब लोग आज से संकल्प करिए कि कचरा दूर तो गंदगी दूर. जय द्वारकाधीश. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी. एंड वी हैव वैशाली शिंदे जी, वैशाली श्रीकांत शिंदे जी. एक्चुअली हमारे आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी की भाभी जी, या वेरी वेरी एक्टिव. शी इज एक्चुअली Vaishali ji, before the sun start, can we have few words from Vaishali ji? Okay, I have the representative from the G North Ward, Nilesh Goyal ji, please आइए. आपका बहुत सारा काम. So all the representative of Jamna bhai, please raise your hand. I know it's बहुत गर्मी है, but there's a good supply of water by High Hydration Partner Bisleri for doing this waste management and all the justifying the waste what they have been, what जो कचरा हम अपने घर में करते हैं उसको हम जस्टिफाई करते हैं.
you, Samar Bharat United. Asif Babla ji to please, Raj Lakshmi, please come, sir, and give a sapling to समर भारत के हमारी जो ऐसी दुखद घटना जिसको इंसानियत में हम लोग नहीं गिनेंगे, ना कोई धर्म जाति गिनेंगे, बट हम सब लोग आग बन करके उन सारी आत्माओं के लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सारी आत्माएं आज स्वर्ग में जाएं और ऐसा हादसा आने वाले पूरे दुनिया में कहीं ना हो. So let's pay our tribute to the martyrs, our fellow Indians. जाने जाती है, जाने बचाई भी जाती है, बट हैट्स ऑफ टू द इंडियन आर्मी, स्पेशली वी आर एट द कोस्टल, हम यहाँ पर मुंबई के कोस्टल लाइन पर रहते हैं, तो बिग सल्यूट टू द मुंबई पुलिस. ऑल्सो मुंबई पुलिस हमेशा हम लोगों को इतना सुरक्षित महसूस रखती है. एनी पार्ट ऑफ मुंबई इज सो सेफ बिकॉज ऑफ द मुंबई पुलिस. ये खाकी वर्दी हम देखते हैं तो हमें वो सुरक्षित, स्पेशली हम चाहे वो छोटा बच्चा हो, महिला हो, लड़की. Thank you so much everybody for coming and cleaning the Meठी River with us, and this is our second round of cleanup. Before that, at 5 o'clock we had a lot of volunteers who had come and cleaned. You wouldn't have been able to walk on sand. It is so dirty. There's only kachra over here, and that's why we got it cleaned. There's a lot of open defecation, and for hygiene purposes we had to get this all cleaned beforehand. And yeah, this is my 550th week of beach cleanup, and I hope this goes on till we don't see any waste. So yeah, to 2000 weeks of beach cleanup, here it is. And yeah, thank you to all you beautiful, wonderful, fearless ladies who have come and supported me. It means a lot, and you all are role models to so many, and even me. So yeah, let's go clean, and we should start the cleanup. Thank you, sir. But I think the clean. Can I have the flags on the stage, please? All the flags on the stage. I think we'll start the flag off. Brand ambassador आए नहीं हैं, वो late है. But everybody else is here on time, so I think we should not make the students stand in the sun for too long. Yeah, and we've all been here on time. The youth needs to come on time also. All the flags given to all our guests, and we'll flag off. Can I have more flags? फोटोज येत नाही पूर्ण लाईट येते मागूनच काढतोय येणारच नाही तर थोडं मागे ना. Okay, when we flag off, we start the cleanathon. So in the count of 1, 2, 3, the flags goes up and we go on the beach and clean up. Do this. So 1, 2, 3. Yay! Come on, big round of applause, and we are completing 550 week. Let's all go on the beach. It's almost clean, but yes, your contribution, wearing the gloves and picking whatever you see. Just be very careful. There may be glass pieces and all that. So, sorry? Yeah, microplastics are also there. Yeah. Please present the Momentum Trophy to Vedant. Sir. Request, sir, please just give away this. Yeah. सर अनाउंस कर रहे हैं क्या? हाँ, चीज में दूंगा सेंटर चीज हो रहा है ना. Thank you, Vedant. This the youth has been waiting for you, and before we start, come here.
time next time onwards. So because we all are here since 5 a.m. and we've been cleaning. That's why you can walk on sand and walk on kachra. Second, and yeah, so you are going to be working with us shortly on various campaigns in your school or secondary also. And we will be doing a lot of cleanup, a lot of drives on waste management, a lot of creating awareness on circular economy. So yeah, and Vedang is the youth ambassador because our generation needs to be more alert because we are living here longer than people like ours and our kids. That's it. Yeah. So Vedan, we've completed just 550 weeks, and this is just the beginning. We always believe. So all of us joining hand and doing such beautiful camp, right from Goa to Bangalore to Kerala and Mumbai. Seher and all of our team been working hard. And yes, World Environment Day, as we are approaching, the theme is the Tick Tick Plastic, that is beat plastic pollution, ending plastic pollution. You being the youth face, the face is going to be representing about the World Environment Day, representing the United Nations and your thoughts. And I think all students have been waiting for you to hear your thoughts on environment, apart from you being a superstar upcoming, and you are right now. I'm no superstar, but hello everyone. It's a great honor to be here today with the Bhabra Foundation, with Seher, and working for this amazing cause. I'm hearing Methi River is one of the dirtiest rivers in all of India, or not even all of globally, and we're doing something really nice over here, and really, to work for the environment is something that's so important, and I feel like a lot of people forget that here. Me coming on as an ambassador for this is just me trying to tell you guys that, hey, listen, we need to, speak up on this matter and not just talk the talk but walk the walk. And I'm glad to be here today. Thank you guys for all the effort you've put in. I'm from the same school, Jamna Bhai. I've been here before, so I know this must be hectic today, but thank you guys for showing up and putting all this work in on this sunny day, and many more to come. Thank you guys. देखो चलने नहीं देगा वो जाने नहीं देगा और इजराइल वाला बैठा है इजराइल में हो रहा है भाई जाके दिखा जाते मैं कितना हिम्मत है देखता हूँ अच्छा जाके दिखा So Tick Tick Plastic Tick Na Paye. Vedanta is going to be leading this campaign, and this year's youth ambassador for Beat Plastic Pollution. So Vedanta, I request you please join hands and make your hands dirty by cleaning up. उसका मट्टी निकाल लो मट्टी ओके दादा बैठ गया I think there's more kachra this side. पीछे आओ यार पीछे आओ पीछे जाओ इधर खड़े रहो दूर खड़े रहो ना थोड़ा अरे ये साइड पे आ जाओ यार बाय बाय ओ दादा उस तरफ गाड़ी में रख ना हेमंत हुआ आवा हो ये ऐसा और बास्केट मंगाइए ना ये गमेला वाला स्वामी हां गमेला लाओ ए भाई गिम्बल गमेला खत्म हो गया मैडम फ्रेंड थोड़ा पीछे आगे हो ए हेमंत हां बाजू में उठो ना फोटो वो सर आगे आओ ना हेल्प करो मैम अरे मोबाइल थोड़ा पीछे रखिए ना आप लोग ये रवि पीछे ये देखना गिम्बल वाला मेरे बाजू में क्या करूँ उसका आ रहा है मेरे फ्रेंड में वो उसको समझाना पड़ेगा भाई तो तुम लोग को दूर रुको है पीछे जाओ और पीछे एक और की मंगाना ना देखो रुको ना इधर की छोड़ो
इसका क्लोज थोड़ी चाहिए भाई, पूरा पूरा माहौल चाहिए ना, जूम इतना है पूरा चले। Guys, go back a bit, please. That's wrong. Yeah. बड़ा बड़ा कैमरा लेके घूमते पीछे से। हेलो हेलो मैम मैम मैम। हेमंत भैया, हेमंत भैया, भर गया, 2 ऑलरेडी भर चुका है। हाँ वही एक फोटो लेते सर, एक जरा खाली फोटो लेते। ये भर के लेते हैं। हाँ ये भर देना, ये भर देना। उठे इकडे मी, अरे आता मी इकडे ना, बोलो सर, ऐक ना, बोलो सर, एक पिक्चर लेते खाली एक कोण आहे तिकडे? ये उठा लेना ना, ये ऐसा उठा लेना, थोड़ा सा हाथ में उठा लेना। अरे दादा आप तो कवर कर ले रहे हैं। उठा लेना, उठा लेना, हेमंत भाई उठाओ। अरे मैडम एक सेकंड। चलो मेरा, चलो डन 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 डन, दैट्स इट, चलो Sorry, bro. Yeah, I think yeah. Let's keep it. Yeah, let's keep it first. इसके साथ नहीं करते ना, अरे थीम है ना, तो पोस्टर पे करके कोई मतलब तो वेदांत जी, ये बहुत शहर जी के साथ में हम बहुत कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप यहाँ पर आ रहे हैं, खुद अपने हाथों से कचरा उठाए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कि ये बहुत ही अच्छा कॉज है और मैं थैंक करना चाहूँगा सबको, सहर जी को, आसिफ जी को, कि इनने ये इनिशिएटिव लिया और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विद ऑल द जमुनाबाई स्टूडेंट्स। मैं इसी स्कूल से हूँ, मैं यहाँ पे ही पढ़ा हूँ, तो इट्स नाइस टू रिकनेक्ट विद माय स्कूल, ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हमने देखा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल के स्टूडेंट्स आपको बहुत ही प्यार दे रहे हैं। सो सहर जी आप क्या कहना चाहेंगे? वेदांत जी यहाँ पर आए, he's the youth of our nation and so am I. I think two youngsters coming together and doing something cool is very nice. He's the brand ambassador for the World Environment Day 2025 and अब बहुत सारी एक्टिविटीज, इम्तियाज अली जी भी जो है जो डायरेक्टर है इस कैंपेन के, तो आप लोग जैसे टाइम जाएगा आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा एंड वेदांग इज ऑलवेज अप फॉर अ गुड कॉज। So yeah, that's thank you guys. Thank you. Yeah. 3, 2, 1. Let's tick plastic. Let's tick plastic. Let's tick plastic. चलो साइड चलो बस मैडम साइड। बच्चे लोग बाद में आ जाओ, बाद में आ जाओ। बहुत क्लोज है यार। आसिफ भाई कहाँ है? एक मिनट। आसिफ भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। ओके एक मिनट बाय बाय थोड़ा मागे So what do we do to the garbage after we थोड़ा Vedang, come in front. वेदांग Yes. राशि जी। So we say beach cleanup, right? So we clean the beach, we collect all this garbage. But the
water is not solved. So what do we do with the garbage when we collect after the cleanup? That's very important. Before we justify that garbage, we send it to a recycle center. All the waste has been segregated. Besides the single-use plastic, glass bottle. Rashi ji, एक मिनट बेटा. Or single-use plastic or microplastic, everything goes to the recycle center. Everything is segregated and everything gets recycled. So whatever collected here, does we see teddy bears, Archies, we tied up with Archies. The softness inside is out of waste. Washed, polished, recycled. The benches at Carter Road, all over Bombay with Bisleri is made out of those, the cap of the PET bottle. All that. The plastic bottle is used for multiple things. So like that, we just do it after the cleanup. And that's what 550 week is all about. Started by Asif bhai. Started by Sahel. When we do 100 week or 50 week, we go like a big thing like that. Otherwise, our volunteers keep doing. They do the activity. Mrs. Shinde is here, Rashi, you're here, Vedant, you're here. So with you all coming, what happens is the reach increases because the media, of course, catches on, covering images like yours. Something very special happened in the morning. And Rashi's got the... कचरा भी देखना चाहिए चलो थैंक यू चलो थैंक यू डन डन मैम Stage if she's around, I would request Shaista ma'am from JM Barwa to please come on stage. We all love Rashi Khanna. Not only you, we all, the entire Bamla Foundation, all the eco champs, we all love the spirit of Rashi Khanna. What a wonderful dedication of your birthday or tree plantation. And अच्छा जो भी कचरा आप लोग जमा कर रहे हैं, so before that can we have the flag of the Bamla Foundation? दो flags आप मुझे दे दीजिए, because just before Rashi you entered, we've announced Vedant as. अगर हम बात wellness की करते हैं तो it's all about. Can I have some more flags please for providing? Okay. Okay, आप जो भी कचरा जमा कर रहे हैं, we have a collection center for this World Environment Day. Rashi ji putting the flags off, and we officially announce her as the wellness ambassador for the World Environment Day. When we talk about wellness, it's all about your mental health, your physical health, and you can see how fit Rashi is here and joining this beautiful cause. Rashi, आप उनसे flag लीजिए, and please your thoughts and everything, whatever you think about wellness, environment, and health. Everybody, I'm very, very happy to be here. Thank you, Asif sir. Thank you, Seher, for having me today. I think Bamla Foundation has been doing such great work in relation to the environment. I also did something for my birthday with them. We planted some trees, we planted some saplings. I think as an actor, it is my duty and it is my responsibility to look after the environment. Actually, it's our duty as human beings to take care of our environment, and I think it's just a small step of using the influence that we have as actors to be able to influence others to do the same. I'm very happy to see so many students. I see that they're part of the NSS. I too was part of the NSS in my college time, and I know how much hard work we had to put in, but it was all for a great cause. So thank you to the students who are here today, who have done so much hard work, and I heard that 80% of the job was already done by the time we came. I think we were not of much use, but I hope that we're of some use now that we're talking and telling you about this today. I hope it influences you, it helps you understand how important our environment is and how these little steps can really help
global warming and can really help our environment become a better space and become a better safe place for all of us. Thank you so much. Thank you. Oh, also, thanks a lot for making me the Wellness Ambassador. It means the world to me. I think I take environment as a special cause in my heart, and I'm just so glad to be doing this with you. Thank you so much. Thank you. Any speech, but yes, she only believes in action, and thank you, Vaishali Tai. So please, can I request a sapling momentum to be given away to Rashi Khanna by... Can I have the sapling and the trophy for Rashi Khanna, please? Seher Bhamla and Vaishali Shinde ji would present... Nagaraj. Presented to J1 Barwa School by Roshali ma'am and Rashi ji, to the head of J1 Barwa, which has been a family of the Bhamla Foundation, Shaista ma'am. Okay, now these volunteers who volunteer from the school, please. Can I have another volunteer, please? Can I have some more certificates? बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि भामला फाउंडेशन इज हेडिंग इट एज दे ऑलवेज हैव इन एनवायरमेंटल कॉजेस. मैंने अपने बर्थडे के लिए भी प्लांटेशन करी थी भामला फाउंडेशन के साथ, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करते रहते हैं एनवायरमेंट के लिए. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी देयर वेलनेस एम्बेसडर. थैंक यू सहर फॉर डूइंग दिस एंड टू आसिफ सर हु हैव पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट. आज बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चे आए हैं जो एनएसएस का पार्ट है. मैं भी अपने कॉलेज में एनएसएस का पार्ट थी और मुझे पता है कितने काम करने पड़ते थे उस टाइम भी. और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के बच्चे, आज का यूथ इतना इंटरेस्टेड है ये सब करने में. जब मैं आई तो मुझे पता चला कि बीच क्लीनिंग आदि तो बच्चे कर ही चुके हैं. तो हम लोग सिर्फ आई फील एज एन एक्टर आई हैव अ लिटिल इन्फ्लुएंस. तो जितना भी मेरा इन्फ्लुएंस है मैं वो यूज़ करना चाहती हूँ. मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं. एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी रिस्पॉन्सिबल एज ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स आवर प्लैनेट, टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग. लेट्स फाइट इट टुगेदर. एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है एक छोटा सा पार्ट इसका बन के. और जी बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ. थैंक यू. शहर जी, जब आप सभी यहाँ पे बुलाते हैं तो आप राशि जी भी आई हैं ब्यूटीफुल कॉज के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? I would like to thank Rashi. Thank you so much. आप यहाँ आए, and not only once but you always come for all my causes. ये हमारा जो relation है Environment Day last year चालू हुआ था, and that was on a very minor level. This time it's on a serious level क्योंकि राशि जी हमारी wellness ambassador है, and we all know how she likes to be fit, how she likes to have a good impact on the society. And we also know from her choices of film, from her choices of lifestyle, from everything, that she's very she wants to send out a good message, and she means good for this planet. So and to many more campaigns together. Thank you. Great. Thank you so much. Thank you. एक मिनट. अरे भाई एक मिनट रुको. अरे तुम लोग सब बहुत ही तू तो रहा हूँ. ए भाई, अगर उसका मैं नहीं कॉल नहीं कि भाई रात दिन में 24 किए नहीं भाई योग काम इसके लिए करना पड़ता है भाई. एक तो बोला नहीं इतना परेशान कर देगा भाई. राशि के पीछे पड़ेगा हाँ. अरे तुम भाई बूम दिखाओ बस. बूम मुंह में घुसा देते हो भाई. ऐसा नहीं करते है भाई. ये जरा समझाना भाई. थोड़ा लेवल पे रखे माइक. ठीक 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 ठीक. आपकी तो फोटो हो गई. यार चल सर एक मिनट बस. ये हमारा 550 वीक है और भामला फाउंडेशन के लिए गौरव की बात है क्योंकि राज्य शासन का धोरण है कि माझी वसुंधरा के चलते. तो आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने और हमारे पंकजाताई मुंडे जी जो पर्यावरण मंत्री आशीष शेलार जी, उन्होंने धोरण किया है कि इसे एक बड़े खूबसूरत तरीके से मनाया जाए 2 तारीख से लेके 1 मई तक के. तो ये बीच में आज हमने किया. हालांकि बहुत सारे और डिग्निटरीज आने वाले थे लेकिन चूँकि शोक थोड़ा सा चल रहा है जो दुर्घटना घटी है उसके चलते बहुत दुख का ये राशि जी
ने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ अपनी शूटिंग छोड़कर यहाँ लोगों के बीच आई, साफ सफाई किया और ये वेलनेस एम्बेसडर है और आप इन्हें 5 जून को भी 4 जून को भी देखेंगे भामला फाउंडेशन के साथ। तो आज जो एक बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन हम दुख का भी इजहार कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और कश्मीर और पहलगाम जो हम सबके दिलों के इतना करीब है। तो लेकिन आज हमने मौन रखा 1-2 मिनट का और इस तरीके के कैंपेन्स हर सप्ताह होते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा मीडिया वगैरह कुछ नहीं बोलाते, हम एक्टिविज्म होता है क्योंकि मीडिया वगैरह आते हैं तो जो एक्टिविज्म होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है बिल्कुल, लोग तस्वीरों में लग जाते हैं। तो जब ये सारे नहीं होते और ज़मीनी स्तर पर हमारे जो इको चैम्प से कार्यकर्ता है ये काम करते हैं, तब जाकर रियल काम होता है, चाहे वो स्वच्छता का हो, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ हो, एयर पोल्यूशन के खिलाफ हो, वाटर पोल्यूशन के खिलाफ हो। भामला फाउंडेशन आज लगभग 29 बरस हो गए हैं भगवान की दया से, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। और आप लोग हमेशा, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, राजनीतिक लोग हैं, आज एकनाथ शिंदे जी की बहू भी यहाँ रही, आपके श्रीकांत शिंदे जी भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमारे मिनिस्टर है वो भी रहे, और अभी आशीष शेलार जी भी यहाँ आ रहे। तो ये सब लोग का मिलकर, और कई सारे राजनीतिक लोग थे, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि एक साइड पे शोक भी चल रहा है तो कुछ थोड़ा सा एहतियात रखने के लिए कुछ थोड़ा सा ये, बट ये बहुत खूबसूरत हुआ। 1900 बच्चे छोटी बात नहीं होती, सुबह सुबह उठ के बेचारे पूरी ऊर्जा के साथ आकर, एक स्लैब 5 बजे आया जो पूरा क्लीन अप करके गया, ये साइड जो आप देख रहे हो, और अभी दूसरा साइड जो 9 बजे से शुरू किया है, सॉरी 8 बजे से शुरू किया और अभी तक क्लीन अप। आपके बारे में बात। हाँ जी, देखिए, आई कंडेम वायलेंस, और कोई भी एवरी ह्यूमन बीइंग इज कंडेमिंग वायलेंस। जो भी हुआ है, बहुत ही कुछ वीडियोस देखे मैंने, आई थिंक जो भी उन्हें देखेगा उनका दिल जरूर टूटेगा। आई थिंक हम सब ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, but it has affected our country, it has affected its citizens. I've been following the news and it is heartbreaking, and I condemn violence, and I can only give my support and love to the families who are grieving, and I hope we fight this as a nation and come back strong. Thank you. Let the students. Inaude. वेदांग भाई, वेदांग आप ना पीछे लो ना, वाइड लो ना, वाइड अलग कर लो। राशि की ये वीडियो एयर ड्रॉप कर दो, ये वीडियो एयर ड्रॉप कर दो, ये एयर ड्रॉप कर दो। Take the class because that's the motto of the company. Make the catch, please. That one sapling. One sapling to Sophie Premji. Can I have a sapling, please? Yeah. Vedant Vera will give away a sapling to our patron and very close to the Bhamla Foundation. Sophie ma'am, please come here. Yes. Yeah, thank you. Thank you so much. Actually, now.